Hello everyone, I am Kartika and we people were discussing the exercise part of your chapter. We people have ended the chapter's discussion, but we people are discussing the question answer, the exercise part. So हम लोगों ने 5 questions जो है पिछले session के अंदर discuss कर लिए थे. Now we people are going to discuss remaining questions. You people can see on the screen here. We people are going to start from the 6th question now. Why are the wages for farm laborers in Palampur less than the minimum wage? पालमपुर के जो फार्म लेबरर्स हैं उनकी जो वेज है वो कम क्यों है मिनिमम वेजेस से. सो एज यू पीपल रिमेंबर दैट आई हैव डिस्कस दिस विद यू कि जो वहाँ के लेबरर्स हैं उनके पास इतना काम नहीं है. एक तो पहले जो लेबरर्स है फार्म लेबरर्स उनके अपने खेत नहीं है, तो अपने खेत नहीं है तो किसी और के खेतों के ऊपर जाके काम करते हैं. एंड देन जो ये लेबर भी है फार्म लेबर्स, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है. सो क्या एक कॉम्पिटिशन है. तो अगर आप कहेंगे कि मैं इससे ज़्यादा में इस मिनिमम वेज पे काम करूँगा तो क्या है कि कोई दूसरा जो है वो आपका काम और कम में कर देगा. सो इसलिए हमें जो ये यहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो ये फार्म लेबरर्स हैं, इनको कम से कम पे काम करना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे लेबर कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है. सो ऑल्सो वी पीपल सी दैट जो मिनिमम वेज है यहाँ पे वो फिक्स की हुई है गवर्नमेंट ने फार्म लेबरर्स की 60 पर डे पे. तो जो फार्म लेबरर्स हैं पालमपुर के उनको इससे कम मिलता है, उन्हें 35 to 40 रुपीज़ अ डे मिलते हैं. एंड जो रीज़न है इसका, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि कंपटीशन है यहाँ पर अमंग दी वर्कर्स. जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं यहाँ पे, दे नो दैट सप्लाई इज मोर देन द डिमांड. तो जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा तो सप्लाई है लेबर्स की. So therefore there is competition between the laborers and so they work on the जितनी उनकी मिनिमम वेज फिक्स की है सरकार ने उससे भी कम में काम करके वो लोग देते हैं. सो जो लार्ज फार्मर्स हैं वो इस सिचुएशन का क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उन्हें जो है वो वर्कफोर्स भी मिल जाती है और कम से कम ज़्यादा वर्कफोर्स मिल जाती है कम से कम पैसों में. So there's a plus point for them. So जो यूज़ है मॉडर्न एग्रीकल्चरल चीज़ों का, जैसे कि ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, इन्होंने भी रिड्यूस कर दिया है लेबर्स का काम. फार्म अब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फार्म लेबरर्स की क्योंकि मशीन्स काम कर रही हैं उनकी जगह. सो देयरफॉर अगेन जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई जो है वो ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि लेबर्स तो हैं लेकिन उनके लिए उतना काम अवेलेबल नहीं है. So these are the things. So therefore the competition for the laborers it increases and so we people see कि वो कम से कम वेजेस के ऊपर इस वजह से काम करते हैं. जहाँ पे सप्लाई कम होगी ना लेबर की और काम ज़्यादा है तो वहाँ पे लेबर अपना मनचाहा रेट मांग सकता है क्योंकि कैसे भी करके काम तो करवाना ही है ना यार. लेकिन जहाँ पे डिमांड कम है, लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, तो लेबर्स की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बट लेबर्स आर अवेलेबल टू, they are ready to work. But what will happen is that they won't get a chance to work because they cannot put forward what they want. उनको जो दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतने में काम करना ही पड़ेगा बिकॉज यही एक लौता मीडियम हम लोगों के पास अपना लाइवलीहुड डेराइव करने का. So let's just write the 6th answer. Okay, so we people are discussing answer number 6. Let's start writing answer number 6. So आंसर नंबर 6 के अंदर जो मिनिमम वेज है वो गवर्नमेंट ने फिक्स करी हुई है. द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द फार्म laborers in Palampur is 60 rupees per day. But उन्हें तो इससे कम मिलता है but they are paid less than this, which is
around 35 to 40 rupees per day. Now, why are they paid less? They are paid less because the supply of labor is more than their demand. So, there is competition between the laborers for work. This makes them work at lower wages. And secondly, एक तो ये हो गया reason. Second reason क्या है? Secondly, with the use of modern farming, modern agricultural implements, with modern implements like tractors, threshers, it has also lowered the demand of their work. So जो agricultural लेबर्स हैं इनकी इतनी डिमांड अब नहीं रही है. Has lowered their demand to work. So जो बिग फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को. बिग फार्मर्स एक्सप्लॉइट. Big farmers, what they do is they exploit this situation and get cheap labor for their work. So this is how the things go on. Moving on forward, we people are going to now discuss. You people can pause the video and take down the notes. I'm just gonna flip the page because I have to discuss next question with you people. So as you people can see on the screen, we people have discussed 6 questions. Now on the 7th question, we people will be looking in your region, talk to 2 laborers, choose either farm laborer or labor working at construction site. What wages do they get? Are they paid in cash or kind? Do they get work regularly? Are they in debt? So this is somewhat an activity based question. आप अपने एरिया के अंदर जो लेबर है उनसे बात करके देखिए, चाहे वो डेली वेज लेबर हैं या फिर वो फुल एम्प्लॉयड लेबर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं या फिर वो जो है कहीं और काम करते हैं. आप उन लोगों से बात कीजिए, उनके वेजेस के बारे में पता कीजिए. So you people will get an idea how laborers, they work, how they earn their livelihood. So this is all, it's an activity based question. We have no need to discuss it here. But if you people want, you people can do this, go further and do this activity. So therefore, I am giving you people a pass on this question. 7th question I am passing. So let's move on to the next question, which is the 8th question. What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Very easy question. We people have discussed this topic in depth. So I don't think so there will be a problem with you people to get answers in your head about this. But still I'm gonna give you answers, don't worry. So what are the different ways जिससे production बढ़ाई जा सकती है उसी same piece of land पे? Examples के साथ explain करना है.
So this is an easy question. This is a question that is not that difficult कि ऐसा लगे कि आंसर नहीं पता है इसका. So पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, if you people remember, that was multiple cropping. Multiple cropping is a way जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसी सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर जो है वो क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है, ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. एक ही पीस ऑफ लैंड पे जब हम लोग ज़्यादा एक से ज़्यादा क्रॉप हम लोग उगाते हैं, 2-3 क्रॉप्स जो है हम लोग उगाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारा आउटपुट भी बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि हमने क्रॉप ज़्यादा उगाया है. सो मल्टीपल क्रॉपिंग इज वन वे, इट्स दिस way of increasing your output. Then also modern farming methods को use करने से. Second thing is by using modern farming techniques you can again increase your productivity, you can increase the output. एंड जो मेथड्स हैं, दिस इज फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड, दिस इज अ मल्टीपल क्रॉपिंग है. तो आप जब एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हो एक साल के अंदर, तो फार्मर्स जो हैं ये उत्तर प्रदेश के प्रैक्टिस करते हैं. अगर एग्जांपल की बात करें तो यूपी के जो फार्मर्स है प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि खारिफ दे ग्रो ज्वार बाजरा. देन जो नेक्स्ट है ये जो प्लांट्स हैं इन्हें यूज किया जाता है टू फीड द कैटल. देन जो कल्टीवेशन है पोटैटो का वो अक्टूबर और दिसंबर के अंदर होता है, एंड उसका विंटर सीजन यानी कि राबी के अंदर वीट सो किया जाता है. सो दिस इज वन वे. एंड द नेक्स्ट वे इज ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करना. जैसे कि मैंने कहा था मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की जब बात होती है तो HYV सीड्स की भी बात होती है, उन्हें यूज करना. वो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैं और उनको सो करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रॉप प्रोड्यूस करके देता है. प्रोडक्शन जो है वो क्रॉप की एकदम से बढ़ जाती है, आउटपुट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है. सो बट दिस हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है इट रिक्वायर अ हायर लेवल ऑफ irrigation, it require chemical pesticides, it require fertilizers, that too in a abundant amount. काफी ज्यादा अमाउंट उसकी लगती है. ट्रेडिशनल वेज में ऐसा नहीं होता था, बट यस मॉडर्न वेज के अंदर ऐसा होता है. बट ये आपका आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है उसी पीस ऑफ लैंड से. सो इफ यू पीपल आर गेटिंग मोर आउटपुट देन यू पीपल कैन ऑब्वियसली बैलेंस द कॉस्ट. सो जो ये भी एक तरीका है लार्ज क्वांटिटीज प्रोड्यूस करने का फूड ग्रेन्स की. So this can also be done on the very same piece of land. So we people have two ways to increase the productivity from the same piece of land. That's what we people are discussing. Let's just get the answer for this question on the written. I'm just gonna flip the page because you people can pause the video and take down the notes. That's what I keep on telling you every time I flip the page. So I have flipped the page and now let's see. It's answer number 8. मैंने answer number 7 पे आपको एक pass दे दी क्योंकि वो activity based question था. So let's discuss. Here we people see that answer number 8. So how can we increase the production on the same piece of land? So production on the same piece of land can be increased by, पहला तरीका है मल्टीपल क्रॉपिंग का और दूसरा जो तरीका है दैट इज बाय यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज करके, मल्टीपल क्रॉपिंग को यूज करके जो है वो आप इन दो तरीके से उसी सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हो. नाउ टॉकिंग अबाउट दीज टू थिंग्स सेपरेटली, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में अगर हम अलग से बात करें तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, दिस इज अ वे जहां पर इट इन्वॉल्व्स
It involves growing more than one crop on the same piece of land. और अगर इसकी बात करें, for example, farmers of UP, Uttar Pradesh, they practice multiple cropping. They practice multiple cropping as during the rainy season, or you can say during the Kharif. They grow jowar and bajra. They grow potato during October and December. And then in Rabi, they grow wheat. So this is how they do everything. So ये मल्टीपल क्रॉपिंग का तरीका है, उन्होंने एक ही साल के अंदर जो है तीन चीजें ग्रो कर ली हैं. So this is multiple cropping. This is one method. Now people, I'm just gonna flip the page so people can pause the video and take down the notes. If you people haven't taken the notes, I have flipped the page. So moving on forward, next is this modern farming methods. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की अगर हम लोग बात करें, सो दिस इज अ मेथड जिसके अंदर साइंटिफिक वेज और यू कैन से दैट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इन्वॉल्वमेंट है. सो हाई यील्डिंग variety seeds are employed in modern farming methods. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, HYV seeds require more irrigation, pesticides and fertilizers. And therefore increases the output from the same piece of land. So this is how it works, and we people see
कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वांटिटीज़ में फूड ग्रेन प्रोड्यूस करके देता है, सो देयरफॉर ये भी सेम पीस ऑफ लैंड पे ही होता है। तो ये एक और तरीका है मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. So you people have discussed question number 8. Let's see question number 9. Here is the book. Let's see the question number 9. Describe the work of farmer with 1 hectare land. उस farmer का काम बताइए जो कि 1 hectare of land इस्तेमाल करता है, जिसके पास सिर्फ 1 hectare of land है. So if we will discuss this, so we will see that जिसके पास the farmer that work on a farm with 1 hectare of land, so it is kind of problematic. Why? Because जो land cultivate करता है वो काफ़ी छोटा है, 1 hectare is small, जो output है वो भी low ही होता है, और they produce for their survival, but they are not able to produce surplus जिससे वो बेच भी पाएँ, क्योंकि उनके पास जो piece of land है that is really small, जिसमें इतना cultivate नहीं कर पाते हैं कि वो extra आउटपुट निकाल लें जिससे कि वो सरप्लस की तरह काम करे, और फिर it gives them this extra so that they can sell after keeping it for their families. Then they also begin to work on their farm, और उसके लिए उन्हें सीड्स खरीदने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं, उनकी अपनी नीड्स जो हैं वही पूरी नहीं हो पा रही. तो लार्ज फार्मर्स है वो उन्हें मनी लेंड करते हैं लोन्स की तरह, और फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी हाई होता है. सो अगेन दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द फार्म्स ऑफ देयर मनी लेंडर्स, ताकि वो अपने वो पैसे भी जो है इंटरेस्ट के पैसे और अपने जो पैसे उन्होंने उधार लिए हैं वो उतार पाएँ और वापस कर पाए उन्हें. सो दे वर्क ऑन देयर फील्ड एंड ऑल्सो they work on their money lenders field, और their families are also involved in it. वो फील्ड पे काम खाली फार्मर नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली करती है, because they cannot afford the laborers, because they themselves are working as laborers on their farms as well as on someone else's farm. So उनका जो एफर्ट है प्लाविंग और सोइंग सीड्स का, sometimes irrigation is there for them, sometimes irrigation is not there for them because they cannot own their own private tube wells. So that is also a problem. So जो facility है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो output है इनके यहाँ पे low ही होता है. They are barely able to meet their daily demands. तो वो surplus में तो क्या ही ला करके बेच पाएंगे. And then we will see कि जब harvest आता है तो कोई ज़्यादा surplus तो इनके पास होता नहीं है, तो ये अपनी जो है need पूरी करने जितना ही उतना ही कर पाते हैं. तो इनको अपनी money lenders को पैसे वापस करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए. काफ़ी बार ऐसा होता है ये जो है अपनी they people don't have that much कि ये सेव भी कर लें. So they are left in the condition जिसके अंदर कि they have to work themselves only to improve their farming conditions. So we people see that they are left with no working capital, and they have to work on the farm of their money lenders, and then they have to give back the loans, then they again take the loans. So this is a circle जिसके अंदर वो फंस जाते हैं. So this is the whole story behind people who have 1 hectare of land. So let's see. I have actually given you the whole full-fledged story. I don't think so. There's a lot to give on this. So I'll still give you the major points on this answer. So answer 9 is people with less hectare मतलब जो उनके 1 hectare of land होता है उनके साथ क्या होता है कि उनका cultivation is small. Cultivation is small, produce for their consumption, no surplus, take loans, work on their farms and on their money lender farm in order to repay their loans
I'm gonna just flip the page. People can pause the video and take down the notes. I will just now turn the page. So next we will see that they employ their family as working force. Then we will see that they don't have savings, so they lack saving. They lack savings. No working capital. आप इन्हें चाहें तो ये सारे पॉइंट्स को इन डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इतना इन डिटेल इसको यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ. आप लोग इन डिटेल ही क्वेश्चन जो जो आप फैक्टर समझाएंगे वो इन डिटेल ही लिख कर आएंगे वहां पर. सो नो वर्किंग कैपिटल. देन वी विल सी दैट they are always in that loop, in that circle of loans, trapped in the vicious circle of loan. So this was answer number 9 that way people have discussed. Now let's see question number 10 quickly. Question number 10 is, how do medium and large farmers obtain capital for farming? How is it different from the small farmers? Medium और large farmers अपनी capital कैसे लेकर आते हैं production के लिए, और ये small farmers से अलग कैसे है, उनसे different कैसे? Again it is very simple. जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स हैं इनके पास इनका प्रोड्यूस होता है प्लस इनका सरप्लस होता है, ये उसको मार्केट के अंदर बेचते हैं. उनको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल बेचने से, अपने खाने के लिए तो है ही, प्लस सरप्लस बेचने से उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है. सो दे अर्न एंड एज वेल एज दे हैव द सरप्लस. उस सरप्लस को बेच के फिर इनका पैसा आ जाता है, कुछ पैसा ये बैंक में डालते हैं, उससे ये अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ें खरीदते हैं, और बाकी बचा जो है वो ये लोग लोन देते हैं छोटे फार्मर्स को, ताकि उस पर इंटरेस्ट जो है वो कमा पाएँ और पैसा जो है उससे बना पाएँ. देन ये चार्ज करते हैं हाई इंटरेस्ट लोन्स, एंड देन इनको और अर्निंग्स होती हैं. मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो हैं इनके पास हमेशा रेडी कैपिटल होती है. सो they don't get a problem as such फार्मिंग के उसके अंदर. लेकिन अगर बात करें छोटे फार्मर्स की, तो छोटे फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल सीजन के अंदर दे डोंट हैव कैपिटल, so therefore they also don't have this capital, so they have to take loans. So they take loans from these medium and large farmers, and their loans are really on higher rates, हायर इंटरेस्ट रेट्स पे उनको होते हैं. सो जो ये छोटे फार्मर्स हैं इनका जो कमाई है वो उतना ही होता है जिसमें कि अपनी फैमिली को खाना खिला पाए. इनका सरप्लस इतना ज़्यादा नहीं होता है. सो दे हैव टू पे बैक देयर लोन्स एज वेल एज दे हैव टू फीड देयर फैमिली. दे डोंट हैव अ सरप्लस जिससे कि वो पैसे वापस कर पाएँ या उनकी भी कोई सेविंग्स हो. तो दे हैव नो कैपिटल, so they don't have surplus to sell. Their production is really small. So this is the difference. So let's see the difference between the medium farmers and small farmers. So medium, large farmers और यहाँ पर small farmers. So बात करें अगर हम लोग मीडियम फार्मर्स की, सो जो मीडियम लार्ज फार्मर्स है इनके पास क्या होता है, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड सेल दी सरप्लस. रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस एंड सेल दी सरप्लस. उसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास जो है हमेशा ही कैपिटल होती है फार्मिंग के लिए. रेडी कैपिटल फॉर फार्मिंग. तो इनका कैपिटल जो है वो हमेशा रेडी होता है फार्मिंग के लिए.
उसके बाद हम लोग देखते हैं दैट दे लेंड लोन्स, दे अर्न एक्स्ट्रा एंड लेंड लोन्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनके पास हमेशा ही एक एज आई टोल्ड यू कि रेडी कैपिटल तो होती है फार्मिंग के लिए। बात करते हैं छोटे फार्मर्स की, तो छोटे फार्मर्स जो होते हैं हैव नो सरप्लस। उसके बाद जो छोटे फार्मर्स हैं दे डोंट हैव कैपिटल, दे डोंट हैव कैपिटल, they don't have capital। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है बोरो लोन्स ऑन हाई इंटरेस्ट। So this is the difference between them. I have given you the difference. Let's move on to the next question, which is question number 11th. Question number 11th here asks us on what terms did Savita get loan from Tajpal Singh? Would Savita condition be different if she could get loan from the bank at lower rate of interest? सविता ने लोन लिया था ताजपाल से, तो क्या वो लोन अगर बैंक से लेती तो उसकी कंडीशन डिफरेंट होती जो उसने ताजपाल से लिया हुआ है उसके कंपैरिजन में। सो इफ वी विल टॉक अबाउट सविता को पैसे चाहिए थे सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, वाटर इरिगेशन के लिए। सो उसे पैसे चाहिए थे रिपेयर करने के लिए अपने फार्म के इंस्ट्रूमेंट्स को भी। सो उसने बोरो करी मनी फ्रॉम तेजपाल who's a farmer in the village। सो यहाँ पे ताजपाल दिया हुआ है। सो ताजपाल सिंह जो हैं whatever the name is, we people will not stress on the name so much। so जो तेजपाल सिंह ने एग्री किया कि वो लोन देंगे 3,000 का, उस पर इंटरेस्ट लेंगे 24% 4 महीने के लिए, और उनको उसके फील्ड पे भी काम करना पड़ेगा एंड उनको जो डेली वेज मिलेगी वो सिर्फ 35 रुपीज मिलेगी पर डे। सो ये she knew that she is a small farmer and it is really difficult for her to get loan। so इसलिए वो इन टफ कंडीशंस पे उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन अगर उन्होंने बैंक से लोन लिया होता तो उनकी सिचुएशन डेफिनेटली डिफरेंट होती। पहले तो उनको लोन मिलता एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 24% इज रियली हाई, बट उन्हें एक रीजनेबल रेट पे मिलता ही है। और उसके बाद वो अपने अटेंशन जो सिर्फ अपने फार्म पे दे सकती थी क्योंकि उन्हें किसी और के फार्म पे काम नहीं करना पड़ता। So this is obviously different from the condition that Tejpal has asked her on। So this is how it is different। So I'm not gonna give you an answer for this, a written answer, but we all people know the story, so it is really easy for us to bring out the comparison, and I have also given you the comparison। Moving on to the next question, 11th question। Let's see what 11th question says। Is the 11th question on okay 11th question हम लोगों ने सॉरी डिस्कस कर लिया। now let's go on to the 12th question। what is the 12th question? Talk to some old residents in your region and write a short report on the changes in irrigation and changes in production methods during the 30 years। आपको कहा गया है अपने एरिया के अंदर लोगों से बात कीजिए, एक रिपोर्ट बनाइए कि क्या चेंजेस आए हैं इरिगेशन के अंदर, क्या चेंजेस आए हैं प्रोडक्शन के मेथड्स के अंदर। यू पीपल हैव टू राइट अ नोट। अगेन दिस इज अ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, सो आई एम नॉट गोना टेक इट, यू पीपल कैन गो फॉरवर्ड एंड डू इट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज the 13th question again। what are the non-farm production activities taking place in your region? make a short list। आपके रीजन में कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जो कि फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, अपने रीजन में देखिए और उन्हें एनलिस्ट कीजिए। दिस इज अगेन एन एक्टिविटी बेस्ड। मैं आपको वैसे एक दो एग्जांपल देती हूँ। ये डेयरी का काम हो सकता है, शॉपकीपिंग का काम हो सकता है, टेलरिंग का काम हो सकता है, टेलर्स जो आपके लोकेलिटी के अंदर होता है, अगेन दिस इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। देन they can be other mechanic का काम हो सकता है। so these are all different kind of activities। you people have to enlist these activities in your area। so people living in cities, it is really easy for you people to enlist these activities because आपके आसपास ऐसी बहुत सारी activities है जो farming से related नहीं है अगर आप village में नहीं रहते हैं तो, ठीक है। so moving on forward, again this is something that you need to do it on your own। moving on to the last question which is what can be done
so that more नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेज। ऐसा क्या करें जिससे कि और नॉन फार्म एक्टिविटीज शुरू हो जाएं विलेज के अंदर। तो पहला तो मैं इसके लिए कहूंगी कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज लेके कुछ स्कीम्स लेकर आए जहाँ पे जो लैंडलेस लेबरर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें चीप लोन्स के ऊपर जो है वो अपना कोई काम शुरू कर पाए। दिस कैन बी वन थिंग। नेक्स्ट कैन बी फाइनेंशियल असिस्टेंस अगेन मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, और कुछ वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिसके अंदर कि जो विलेज के लोग हैं उनका स्किल डेवलपमेंट हो पाए। और उसके बाद जो सरकार है वो इम्प्रूव करे इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेज सो दैट दिस थिंग इज easy. So I'm gonna write the answer here. For the 14th question, I'll just write the answer. तीन तरीके कौन कौन से हैं? Answer number 14 here says that government जो है वो schemes लेकर आए, government to come up with schemes for this. Then we people see that government, next is that government should give financial assistance, should be provided, and lastly skill development programs should be initiated, and उसके बाद lastly we will see that government should improve the infrastructure, improvement in the infrastructure by the government. So these are the ways जिससे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो हैं ये और आगे बढ़ सकती हैं. So we people have discussed all the 14 questions. We people are done with this chapter. Everything is done. The chapter's discussion is done. The question answer part is done. So we people have ended the first this chapter of your book, economics book. So this was all for this session. Thank you everyone.